Good morning, everyone. Welcome to the morning con call. We'll begin with the technical and derivatives outlook on the market today. Yesterday it was a sideways monthly expiry for the market as both the indices continued to trade within a range. After a minor drop during the first half, Nifty managed to hold on to the intraday support level of 18,200 and showed a bounce back since then. Technically, the index continues to trade within the range of 18,050 to 18,450. Talking about sectors, realty sector was the one which showed positivity yesterday and closed with an intraday gain of 1.12%. As per derivatives data, Nifty futures saw a short covering, while on the options front, major call buying was seen at 18,300 strike, while interestingly, the highest open interest currently can be seen at 19,200 strike call in Nifty. On the other hand, put writing can be seen at 18,300 and 18,200 strikes, indicating a support. Nifty PCR saw an upward tick close at 1.05 levels as compared to its previous close of 1.01. Based on both technical as well as derivatives data, the intraday range for Nifty today should be from 18,200 to 18,400, while the wider range continues to be from 18,050 to 18,450. Coming to Bank Nifty, the index too traded sideways yesterday. However, it managed to close comfortably above the support level of 43,500 based on the last hour bounce back. Technically, Bank Nifty continues to be range bound within the range of 43,500 to 44,000. As per the derivatives data, Bank Nifty futures OI is indicating a long unwinding as of now. On the options front, significant call writing can be seen at 44,000 strike, indicating the same as a resistance. On the other hand, 43,500 and 43,000 strikes witnessed put writing. Bank Nifty PCR saw an upward tick close at 0.85 levels as compared to its previous closing of 0.75. The overall setup still indicates a range bound movement for the index. Fresh buying can be planned either at corrections around the support level of 43,500 or once the price breaks through 44,000 levels. Rollover in Nifty is currently at 70.6%, which is higher than its 3 months average of 69.06%, while in case of Bank Nifty, the rollover is at 78.4%, which is comparatively lower than its 3 month average of 87.4%. Overall, we continue to have a positive outlook on the market on both the indices and the buy on dip approach. In the cash market yesterday, FIIs did a buying of rupees 589.10 crores, while DIIs bought worth 338.44 crores. Speaking about some stocks which can be good picks to watch out for today are Tata Elxsi, DLF, Bajaj Auto, Seat, Lemon Tree Hotels, Tata Coffee, and Astral Limited. Speaking about the futures data, major long build-up was seen in Cipla, SBI Life, and Apollo Hospitals, while major short build-up is seen in HUL, that is Hindustan Unilever, Sun Pharma, and ICICI Bank. So this was all from my side. Now handing it over to Bunty sir. Thank you, Shantanu. Good morning, team. As the result season continues, so we'll try to share few result updates, starting with the sale. Sale has reported mixed set of numbers. If you see sales, Q4 results were below our estimate, although net sales were above our forecast. Sales volume remained flat on a YOY basis, but if you see the sequential growth, it was 13% on a Q1Q terms to 4.68 million tons. EBITDA fell by 33% on a YOY basis, led by higher raw material cost and employee expenses. And EBITDA per ton stood at 6,226 rupees per ton, which was up 24% on a Q1Q basis. However, declined by 32% on a YOY basis.
If we see the adjusted net profit, it stood at 1089 crores, which was down 55%, but increased 5 times on a sequential basis, that is Q1Q basis. Currently, we have a sell rating on this stock. Next is on the Prince Pipes. Prince Pipes has reported a healthy set of numbers. They have reported healthy margin improvement sequentially as well as via Q1Q basis. It was led by softening of raw material prices. Net sales were down by 15%. However, if you see the volumes, volume in Q4 stood at 44,317 million tons versus 45,287 million ton last quarter last year Q4 FY22. EBITDA came at 148 crores, which was marginally up by 5.6% on a YOY basis because of lower PVC prices during the quarter. And if you see the net profit stood at 94 crores, which was up 7% over last year on a YOY basis. To bolster its presence in East India, company plans to add 35,000 metric ton pipes greenfield capacity in Bihar at an estimated cost of 150 crores. So overall, strong set of numbers. We remain positive on the Prince Pipe with a buy rating of 861 target price. Next is on the Harsha Engineering. Harsha Engineering, in fact, delivered the results which were above our estimates or above our expectations. It was a slightly miss on the sales front, but profitability metrics exceeded our expectations. Revenue was having a healthy growth of 14% sequentially, that is on a Q-on-Q basis to 343 crores. EBITDA stood at 50.8 crores, which was up 24% on a Q-on-Q basis. Although there was a dip of the gross margins, the performance was made up by 210 bips saving on employee cost and 200 basis on other expenses. If you see, the healthy revenue growth was led by operating leverage benefit and better than expected margin of 14.8%. The profit grew by 9% to 32.6 crores. Higher than expected tax rate impacted the overall PAT growth. Adjusting for the commodity price reduction, the global growth in volume terms is relatively healthy. We have a hold rating on the stock. Next is Rolex Rings. It has reported mixed set of numbers, kind of a thing. Exhibited tepid growth of 4% revenue growth on a YOY basis to 299.5 crores. PAT came in higher than our estimate at rupees 46.4 crores. That was due to lower tax rate, higher other income, and lower finance cost. However, gross margin dipped by 200 bips sequentially to 45.3% due to lower benefit of operating leverage and input price pressure. EBITDA margin also dipped by 60 bips sequentially to 21.6% due to lower gross margin, and decline in PAT was due to lower operating leverage benefits. Company derives 60% of the income from the US and European Union being major contributors. So outlook on these end markets would be the key in light of the impending recession in developed economies. Overall, we have a buy rating on the stock with a target price of 2500. Next is on the Imami. Consolidated revenue grew by 8.8% at 836 crores, which versus estimate of 816 crores. So higher revenue as compared to its estimate. Similarly, EBITDA stood at 200 crores. Estimate was around 172 crores. EBITDA margin stood at around 24% versus estimate of 21%. However, the profit came in line with the estimate around 142 crores. The profitability was down around 60%. The reason behind is that last year, same quarter, they have got the MAT credit entitlement of 287 crores. So overall, strong set of numbers from Imami. Lastly, Page Industries. Page Industries, if you see, is going through a rough patch. Revenue is down 13% to rupees 969 crores versus estimate of 1163 crores. EBITDA further down by 50% to 134 crores versus estimate of 206 crores. EBITDA margin stood at 14% versus estimate of 18%. Similarly, PAT also declined by 60%
to 78 crores versus estimate of 136 crore. So overall, very negative set of numbers. However, they have approved the fourth interim dividend of rupees 60 per share. That's it from my side. Over to you, Hitendra. Yeah, thank you, sir. Good morning, everyone. We'll continue with further updates, starting with Hindustan Zinc. Vedanta Group of London-based Vedanta Resources have placed with 65% stake in Hindustan Zinc to raise fund. This is basically to for the upcoming bond payments due, which are, and last year also they had received heavy dividends from the Hindustan Zinc subsidiary. Second is on Vodafone Idea. Vodafone Idea reported net consolidated loss of 6,418 crores on the back of an increase in operating expenses. In the same period last year, company posted a net loss of 6,563 crores. The revenue increased by meager 2.8% YOY to 10,531 crores. Next is on Reliance. Reliance, the global investment management Bernstein has pegged the RL's valuation at 85% stake in Reliance and 111 billion, while 66.5% stake in telecom and digital platform arm Reliance Jio at 88 billion. Z Entertainment company has reported first quarter loss in 3 years as advertisers tighten their marketing budgets and expenses are short of. G posted a consolidated loss of 196 crores against a profit of 181 crore in the same period last year. That income also fell by 10 odd percentage year on year to 2126 crore. Oil India says that Oil India CMD Ranjit Rath says that that PSU is holding talks with other stakeholders for the potential acquisition of 50% stake in Tullow Oil for a $3.4 billion oil-free project in Kenya. Next is on Mrs. Victor Food reported that earnings, the revenue was up by 37 odd percentage to 346 crores and EBITDA was up by 50 odd percentage to 68 crores. EBITDA margin was measured up by one odd percentage, 1.5% to 19.85%. The net profit was up by 171% at 27.65 crores, and the company will pay a dividend of 1.75. Overall, a good business. AI Engineering reported their earnings. The revenue was up by 17 odd percent at 1273 crores. Their EBITDA was up by 40% at 315 crores. Their EBITDA margin stood at 25% versus 20% at 500 bips jump. And the net profit was up by 38% at 267 crores. The company will pay a dividend of 16 rupees per share. GSFC also reported their earnings. The revenue was up by 17% at 2383 crores, but their EBITDA was down by 22% at 326 crores. The margin also shrunk from 20.6% to 13.6%, a meager drop of 700 bips or 7 odd percentage. The net profit was down by 21% at 224 crores, and the company announced a dividend of 10 rupees per share. Praj Industries approved forming a 50-50 joint venture with Indian Oil Corporation to set up a biofuel production facility that markets CBG and ethanol SAF and various precursor intermediaries. Aircon International also reported their earnings. Their net profit after tax was at 248 crores. It had clocked the 197 crore PAT in the January to March quarter. The revenue was up by 32% at 3,773 crores versus 2,865 crores. TTK Prestige also reported earnings. The net income stood at 627 crore, down 11% from 710 crores, and in the same period March quarter, it was profit reached to 59.45 crores, which was 26% down year on year from 80 odd crores. And the EPS of TTK Prestige has reached 4.29, which is also down 25% from 5577. So that's it from mine. I'll hand over to Kshitija for Hindi updates. थैंक यू सर. गुड मॉर्निंग एवरीवन. अभी हम लोग ये कॉल को एक बार हिंदी में कर लेते हैं. सेल के नंबर्स आए थे. नंबर्स जो थे रेवेन्यू कंपनी ने रिपोर्ट किया है 291.3 बिलियन का. ईयर ऑन ईयर हम लोग देखें तो नेगेटिव है -5.3%, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर पॉजिटिव है 16.3% से. EBITDA है वो 29.1 बिलियन कंपनी ने रिपोर्ट किया. एडजस्टेड नेट प्रॉफिट है 10.9 बिलियन. ईयर ऑन ईयर 55% से डाउन है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफी अच्छी ग्रोथ है 559% से हायर है. ओवरऑल हम लोग देखें तो रिजल्ट जो एस्टिमेट से उससे बिलो ही आया है. और जो सेल्स वॉल्यूम है वो फ्लैट था और इंक्रीज हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस 13% से. देन नेक्स्ट अपडेट है प्रिंस पाइप के ऊपर. प्रिंस पाइप के भी नंबर्स आए थे. प्रिंस पाइप ने रिपोर्ट किए हेल्दी मार्जिन
नेट सेल कंपनी का डाउन था 15.2% से ईयर ऑन ईयर, बट वॉल्यूम जो है क्वार्टर 4 फाइनेंशियल 23 का वो कंपनी ने रिपोर्ट किया 44,370 MT। देन इबिटा कंपनी ने रिपोर्ट किया 1,483 मिलियन, जो मार्जिनली अप बाय 5.6% से ईयर ऑन ईयर। कंपनी ने नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया 941 मिलियन का, जो हायर है 6.7%। जो उनका ब्लस्टर प्रेजेंस है ईस्ट इंडिया में है, और कंपनी का प्लान है कि वो और ऐड करेंगे 35,000 MT पाइप्स ग्रीनफील्ड कैपेसिटी बिहार, और उसका जो एस्टिमेटेड कॉस्ट होगा वो 1,500 मिलियन होगा। अर्निंग कॉन कॉल्स कल है, तो उसके बाद हम लोग डिटेल नोट रिलीज करेंगे, बट लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम से बाय रेटिंग है। देन नेक्स्ट अपडेट है हर्षा इंजीनियरिंग के ऊपर। कंपनी ने नंबर्स रिपोर्ट किए। रिपोर्ट रेवेन्यू जो है वो 3,437 मिलियन कंपनी ने रिपोर्ट किया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हम लोग देखे तो 14% की ग्रोथ है, ईयर ऑन ईयर पे डाउन है 7% से। इबिटा कंपनी ने रिपोर्ट किया है 508 मिलियन, जो ईयर ऑन ईयर देखे तो 5% से अप है, 24% क्वार्टर ऑन क्वार्टर से हायर है। एडजस्टेड प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किया 326 मिलियन, 9% ईयर ऑन ईयर हायर है और 3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर है। कंपनी का जो रेवेन्यू है एग्जिबिट हुआ है हेल्दी ग्रोथ 14% सिक्वेंशियली, और मतलब उनका जो ग्रॉस मार्जिन है वो डिप हुआ है 290 बेसिस पॉइंट से सिक्वेंशियली, और कंपनी का परफॉर्मेंस है वो 200 बेसिस पॉइंट का सेविंग्स जो एम्प्लॉय की कॉस्ट है उस पर, और 200 बेसिस पॉइंट सेविंग जो अदर एक्सपेंसेस उस पर हुआ है। देन नेक्स्ट अपडेट है रोलेक्स विंग्स के ऊपर। कंपनी के जो नंबर्स आए थे उसमें कंपनी ने रेवेन्यू रिपोर्ट किया 2,995 मिलियन का। देन इबिटा मार्जिन है 21.6%। हम लोग ईयर ऑन ईयर पे कंपेयर करें तो लास्ट ईयर 23% था। एडजस्टेड प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किया 464 मिलियन, जो डाउन है ईयर ऑन ईयर 6% से, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे डाउन है 12% से। पैट जो है वो हायर आया था एस्टिमेट से 464 मिलियन, क्योंकि उनका जो लोअर टैक्स रेट था उसके कारण। देन जो पैट में डिक्लाइन देखा गया वो बेसिकली लोअर प्रॉपर्टी लीवरेज बेनिफिट्स उसके कारण था। कंपनी का जो ड्राइव है 60% इनकम जो है उनका एक्सपोर्ट से है, यूएस से और यूरोपियन से, जो मेजर कंट्रीब्यूशन करता है। और ये आउटलुक जो है वो उसमें की इनलाइट है कि डिपेंडिंग करेंगे रिसेशन डेवलप इकोनॉमीज का। देन नेक्स्ट अपडेट इमामी के ऊपर। इमामी जो कंपनी है उनके जो रेवेन्यू है वो 8.82% से हायर है। कंपनी ने रेवेन्यू रिपोर्ट किया 835.95 करोड़ का। इबिटा अप है 22% से 200 करोड़ रिपोर्ट किया है। इबिटा मार्जिन 23.9% से हायर है। नेट प्रॉफिट डाउन है 60% से 131.62 करोड़ से। देन नेक्स्ट अपडेट है पेज इंडस्ट्री के ऊपर। पेज इंडस्ट्री के भी नंबर्स आए थे। रेवेन्यू डाउन है 12.78% से 969.09 करोड़ से कंपनी ने रिपोर्ट किया है। इबिटा भी डाउन है 49.71% से, और उनका जो बीटा मार्जिन है वो 13.86 है। हम लोग लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो लास्ट इससे 24.04 था, तो ये भी डाउन ही है। नेट प्रॉफिट भी कंपनी का डाउन है 58.88% से 78.35 करोड़ कंपनी ने रिपोर्ट किया। ओवरऑल नंबर्स अच्छे नहीं आए थे। बोर्ड ने इंटरम डिविडेंड डिक्लेयर किया है 60 रुपीज पर शेयर। देन नेक्स्ट अपडेट है हिंदुस्तान जिंक के ऊपर। जो वेदांता है उन्होंने पेश किया उनका जो एंटायर स्टेक था 64.9% का हिंदुस्तान जिंक के फंड रेज के लिए। और ये वेदांता रिसोर्स एक लंदन बेस्ड पैरेंट फॉर्म है वेदांता। उनका ओवरऑल पास्ट मंथ रीपेड और उनके जो लोन्स है बॉन्ड्स है वो ड्यू हुए थे अप्रैल के दिस ईयर में, और उसकी जो हेल्प ली गई ये जो डिविडेंड है इंडियन सब्सिडरी के लिए। देन नेक्स्ट अपडेट है वोडाफोन आइडिया के ऊपर। वोडाफोन आइडिया ने रिपोर्ट किया है कंसोलिडेटेड नेट लॉस 6,418 करोड़ ये क्वार्टर में, और देन उनका जो ग्रॉस रेवेन्यू है वो इंक्रीज हुआ है 2.8% से ईयर ऑन ईयर। कंपनी ने ग्रॉस रेवेन्यू रिपोर्ट किया 10,531। देन रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर अपडेट है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म है ब्रेस्टिंग, उन्होंने फेक किया है कि इंटरप्राइज वैल्यूएशन है रिलायंस की 85% जो स्टेक है रिलायंस रिटेल का, और $111 बिलियन, और उनका जो वैल्यूइंग मुकेश अंबानी लेड कंपनी का है वो 66.5% स्टेक है टेलीकॉम एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म जो रिलायंस जियो है, और उसकी जो कॉस्ट है वो अराउंड $88 बिलियन है। देन जी एंटरटेनमेंट के ऊपर अपडेट है। कंपनी ने रिपोर्ट किए ये क्वार्टरली लॉस
उसमें जो एडवर्टाइजर टाइटन है उनका मार्केटिंग बजट और एक्सपेंस वो शूट अप हुआ था। जी ने पोस्ट के कंसोलिडेटेड नेट लॉस 196.03 करोड़। उनका जो टोटल इनकम है वो भी फॉल हुआ है 9.9% से ईयर ऑन ईयर, जो 2126.35 करोड़ कंपनी ने रिपोर्ट किया है। देन ऑयल इंडिया कंपनी है, उनके जो चेयरमैन है और मैनेजिंग डायरेक्टर है रंजीत राठ, उन्होंने कल अपडेट दिया कि वो पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, वो स्टेक होल्डर है, उनके साथ टॉक करने वाले हैं। उनका जो पोटेंशियल एक्विजिशन है 50% स्टेक और टुलोज ऑयल में, और जिसकी जो कॉस्ट है अराउंड 3.4 बिलियन में। ऑयल फील्ड प्रोजेक्ट है ये केन्या में, उसके ऊपर एक्विजिशन के बारे में बात करने के लिए उनका जो टॉक है वो होल्ड करने वाले हैं। देन मिस्टर बेटर फूड के भी नंबर्स आते हैं। रेवेन्यू अब आया है 37% से, कंपनी ने रेवेन्यू रिपोर्ट किया है 346.08 करोड़। EBITDA भी अप है 49.48% से 68.70 करोड़ कंपनी ने रिपोर्ट किया है। EBITDA मार्जिन भी हायर है 19.85% से। नेट प्रॉफिट कंपनी का 171% से हायर आया 27.65 करोड़। कंपनी ने फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर किया 1 रुपीज 75 पैसा। AI इंजीनियरिंग के भी नंबर्स आए थे। रेवेन्यू 16.48% से हायर है 1273.56 करोड़ है। EBITDA भी अप है, EBITDA मार्जिन भी 24.79% से हायर आया है। नेट प्रॉफिट 38% से हायर आया है 267.66 करोड़ कंपनी ने रिपोर्ट किया है। कंपनी ने 16 रुपीज का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। देन गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर केमिकल है, उनके भी नंबर्स आए थे। रेवेन्यू 17% से हायर आया है, बट उनका जो EBITDA है वो डाउन आया है 22% से। देन नेट प्रॉफिट भी डाउन है 21.26% से 224.91 करोड़ कंपनी ने रिपोर्ट किया है। कंपनी ने 10 रुपीज का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। देन नेक्स्ट अपडेट है प्राज इंडस्ट्री के ऊपर। प्राज इंडस्ट्री की जो बोर्ड है उन्होंने अप्रूव किया है फॉर्मिंग 50% जॉइंट वेंचर है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ, जो बेसिकली सेटअप करेंगे बायोफ्यूल प्रोडक्शन फैसिलिटीज, मार्केट, सीबीजी, एथेनॉल और एसएफ का, और वेरियस को प्रोडक्ट्स है और इंटरमीडिएट है उनका। देन इरकॉन इंटरनेशनल है, उन्होंने कल रिपोर्ट किया है कि 25% ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट की है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने रिपोर्ट किया 248.18 करोड़। देन उनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो कंपनी ने रिपोर्ट किया 197.09 करोड़। देन नेक्स्ट अपडेट है टीटीके प्रेस्टीज के ऊपर। टीटीके प्रेस्टीज का जो नेट इनकम है वो अभी 627.94 करोड़ है, जो डाउन है ईयर ऑन ईयर 11% से। देन उसके अलावा नेट प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किया है 59.45 करोड़ का, वो भी ईयर ऑन ईयर हम लोग देखें तो डाउन है 25.71% से। ईपीएस कंपनी का अभी 4.29 है ये क्वार्टर में, और कंपनी का जो नेट इनकम अभी है ये क्वार्टर का वो 2822.79 करोड़ है। ईयर ऑन ईयर देखे तो हार्डली वो 2.37% से हायर है। So that's it from our end. Thank you everyone for joining the morning call. Have a nice day.